Gravitation. Solution of JEE Mains 2024 April physics questions. Question number 1. A metal wire of uniform mass density having length L and mass m is bent to form a semicircular arc, and particle of mass m is placed at the center of the arc. The gravitational force on the particle by the wire is a semicircular arc suppose center of arc is O, इसकी रेडियस R, length of arc is L, तो L will be equal to pi into R or R is equal to L by pi. Mass per unit length m by L. थीटा एंगल पर एलिमेंटल विड्थ, इसका एंगल इज डी थीटा, थीटा। जो लेंथ होगी इसकी एलिमेंट की, that will be r d theta. This is dx. Mass of this elemental length dx, dm mass per unit length into length dx. O पर m मास रखा है, m पर फोर्स बाय दिस एलिमेंटल width is df, and df will be g m dm by r square. अगर बेस के वर्टिकल एक लाइन, this total angle is pi by 2 and this is pi by 2. df के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट. Suppose this horizontal component is dh and vertical component is d. So dh will be df cos theta and dv will be df sin theta. Suppose this arc is A, B, C. वो BC पार्ट के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, और AB का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी right to left, and they will be opposite and equal, hence this dh becomes 0. So net force will be dv df sin theta, or df is gm dm by r square sin theta.
net force F will be double of integration 0 to pi by 2 of Gm dm by r square sin theta. Gm by r स्क्वायर साइन थीटा और dm की वैल्यू रख दी हमने m by l d थीटा. m by l dx. To 0 to pi by 2 g m m l r square sin theta and dx is r d theta. To g m m by l r sin theta d theta 0 to pi by 2. 2 gm m by lr sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा 2 gm m by lr माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस कोस 0. 2 gm m by lr 0 plus 1 2 gm m by lr. r की वैल्यू है r इज इक्वल टू l बाई पाई. पुट कर दिया 2 gm m बाई l बाई पाई और 2 पाई gm m बाई l स्क्वायर. The net force F will be this much 2 gm m 2 pi gmm by l square. This fourth option is correct. Second question. A 90 kg body placed at 2r distance from the surface of earth experiences gravitational pull. R is radius of earth and g is 10 meter per second square. This is earth की रेडियस r और सरफेस से h ऊंचाई पर ये रखा है. ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इक्वल टू 90 kg. सरफेस पर a पॉइंट, दिस इज b. सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is g and that is g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड सपोज b पर है g डैश. g डैश विल बी g r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का स्क्वायर और 10 r स्क्वायर अपॉन r प्लस 2r का स्क्वायर. दिस कम्स 10 by 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर b पर वेट होगा w विल बी mg डैश. m इज 90 and g dash is 10 by 9. This is 100 Newton. 1 is correct option. Question number 3. Correct formula of height of satellite from the earth surface is.
suppose this is Earth, radius of Earth is r, and satellite is moving in this. Satellite m, mass का m, and this height is h, and total radius of this orbit is small r, that is r plus h. Time period t will be circumference 2 pi r divided by v. Velocity is 2 pi r by v होता है g m by r का अंडर रूट, और 2 पाई r की पावर 3/2 जी एम का अंडर रूट, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो जी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब अपॉन जी एम. G is equal to gm by r square, hence gm is gr square. यहाँ से gm की वैल्यू पुट कर दी हमने, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब जी कैपिटल आर स्क्वायर, और r की पावर 3 विल बी टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर. क्यूब रूट ले दिया बोथ साइड, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/3, and r is capital R plus h, t square g r square 4 pi square 1/3. So h will be t square g r square upon 4 pi square का क्यूब रूट माइनस r. This second option is correct. Question number 4. A simple pendulum doing a small oscillation at a place r height above Earth surface has time period of t1 is 4 seconds. t2 would be its time period if it is brought to a point which is at a height 2r above the surface. Choose the correct relation. R is radius of Earth. G डैश की वैल्यू होती है G आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर. तो फर्स्ट कंडीशन में अगर इसको G डैश को G1 लिखें तो G आर स्क्वायर अपॉन आर एंड H इज गिवन एज R. इसका स्क्वायर दिस कम्स G by 4. तो T1 विल बी 2 pi L by G1 अंडर रूट और 2 pi L by G by 4 का अंडर रूट और 2 pi 4L by G का अंडर रूट. इसको लिख सकते हैं 2 into 2 pi L by G का अंडर रूट. दिस इज T1. Second, G2 will be G R square upon R plus H का स्क्वायर, एंड सेकेंड केस में H is 2R. This is G by 9. So T2 will be 2 pi L by G2 under root 2 pi L by G by 9 का अंडर रूट और 3 into 2 pi L by
G का अंडर रूट. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर दिया. इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड किया. T1 by T2 will be 2 by 3 or 3T1 is equal to 2T2. This is relation between T1 and T2. This fourth option is correct. Next, in hydrogen-like system, ratio of Coulombian force and gravitational force between an electron and proton is in order of Coulombian. अगर हम FC से डिनोट करें 1/4 epsilon 0 Q1 Q2 by R square. 1/4 epsilon 0 is 9 into 10 to the power 9. Q1 1.6 into 10 to the power minus 9 in 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19. Proton और electron पर same charge upon R square. 9 into 2.56 into 10 to the power minus 29 by R square. Gravitational force Fg G m1 m2 by R square. G is 6.67 into 10 to the power minus 11. Mass of electron 1.9 into 10 to the power minus 31 into mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 27 by R square. 6.67 into 9.1 into 1.67 into 10 to the power minus 69 by R square. Ratio FC by FG will be, डिवाइड कर दें तो 9 into 2.56 into 10 to the power minus 29 by 6.67 into 9.1 into 1.67 into 10 to the power minus 69. This comes in order of 10 to the power 39. This one is correct option. Match the list first to list second. Kinetic energy of planet minus G_mm by A. Gravitational potential energy of sun planet system G_mm by 2A. Total mechanical energy Gm by R. Escape energy at surface of planet for unit mass object minus Gmm by 2A. Where A is radius of the planar orbit, R is radius of planet, m mass of sun, m mass of planet. Choose the correct answer from the options given below. Kinetic energy, जो kinetic energy है that is Gmm by 2A. Gravitational potential energy of sun, that is minus Gmm by A.
total mechanical energy is minus gmm by 2a and escape energy is gmm by r. तो a के साथ सेकंड सीरीज है, a के साथ a से तो मैच होता है सेकंड, b मैच होता है फर्स्ट, c फोर्थ एंड d थर्ड. सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड. This option 2 is correct. Question number 7. A satellite revolving around a planet in its stationary orbit has time period 6 hours. The mass of planet is 1/4 of mass of Earth. The radius orbit of planet is. Given radius of geostationary orbit for Earth is. Revolving time t is circumference 2 pi r upon speed and 2 pi r upon gmm by r का अंडर रूट और 2 pi r की पावर 3/2 अपॉन gm का अंडर रूट. और t is directly proportional to, this is m. m is directly proportional to 2 pi and g are constant, r की पावर 3/2 अपॉन m का अंडर रूट और t is directly proportional r cube by m 1/2. For Earth, this is 24. For geostationary, the time period is 24 hours. R is 4.2 into 10 to the power 4 का cube by mass of Earth m, root of this whole. Second satellite m इसका 6 and mass is 1/4. This is R1. अगर R1 है geostationary orbit by m is m1 1/2 or 6 is directly proportional to r1 cube upon m1 is m by 4. इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1. 6 directly proportional to r1 cube by m की पावर हाफ इंटू 2. और 3 is directly proportional to r1 cube upon m इसका होल का अंडर रूट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Divide equation 1 by equation 2. तो 8 is equal to 4.2 into 10 to the power 4 by r1 का क्यूब रूट अंडर रूट इसका क्यूब and whole to the under root. बोथ साइड स्क्वायर किया तो 64 इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई r1 का क्यूब
बोथ साइड क्यूब रूट ले लिया, 64 का क्यूब रूट विल बी 4.2 इंटू 10⁴ बाई R1 और 4 is equal to 4.2 into 10⁴ by R1 and R1 will be 4.2 into 10⁴ by 4, 1.05 into 10⁴ kilometer. This second option is correct. Question 2. Project body of mass m from Earth's surface to infinity. The required kinetic energy is, assume the radius of Earth is RE, G is acceleration due to gravity on the surface of the Earth. This is surface of the Earth. यहाँ पर potential energy is minus G m by R. G is equal to G m by R E का स्क्वायर और G m is equal to G R E का स्क्वायर. तो U जाएगा माइनस G R E का स्क्वायर इंटू m बाई R E और माइनस m G R E. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सपोज प्रोवाइड की हमने के ई. इनफाइनाइट पर जो एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, दैट विल बी ज़ीरो. तो U प्लस के ई मस्ट बी ज़ीरो. तो के ई मस्ट बी माइनस U और माइनस एम जी आर और एम जी आर. The kinetic energy must be mgre. Third is correct option.